Now children, we will learn about our new topic. Topic is Excel solver. Children, you will check here that right now we have learned about goal seek and scenario. Goal seek and scenario are the part of what if analysis. There we have learned अब goal seek work on one single variable. ठीक है, ये उसके साथ प्रॉब्लम था कि हम goal seek में एक सिंगल वेरिएबल पे वर्क करते थे. But Excel solver is the advanced version of that goal seek, or we can say Excel solver is the advanced or next step to goal seek. Goal seek में we are working on single variable, but in Excel solver we are able to work with multiple variables. वहाँ पे एक ही variable में change किया था या multiple में कर सकते हैं. Excel solver, why we are using children, actually Excel give us so many functions and formulas. उनको apply करके we are able to solve our problem. But sometime what happen, condition will be like this, that we are not able to place any formula there. So for that we required something कि जहाँ मैं formula लगा भी नहीं सकती, we are having certain condition, so there we are working with this Excel solver. Okay, so how this Excel solver work? First of all, you will check that Excel solver by default, if you found that it will not present in your computer, when you are clicking on data tab, you will check here analysis solver might be possible ho nahi ho. So for this, if it is not present in your computer, then what you have to do, you will click here in the office button or file tab. Here you will check that Excel options, when options in your system, in if you are using 13 version or 16 version, then click on this Excel option. You will check here children, here is add-ins. When you are clicking on this add-ins, you are having these options there. Because I have already solved, तो already देखो active आ रहा है यहाँ पे. So you will select this application solve add-in, and here at the bottom you will check go option manage and then go. You will click on go, and like this, when you are clicking go, this window appear. If this solver add-in is disabled like this, if it is here, you will select this one and then click OK. When you are clicking OK, and now you will click on data tab, you will check that solver is there in your PC. Okay, now how this Excel solver work, children, look, this one is the one item. Okay, I am having one mall. I am inserting here one more column. Here I am writing XYZ mall. This is my mall and I am the owner of this mall. So I am placing this like this. You are coming on in my mall and you are going there for doing purchasing, and there you have purchased, and when you are going there for bill counter, you will check your total amount is this one, and you are going there on this Christmas Eve. So I am giving you one gift voucher of rupees 2000. I am saying you ki sir, today you are free, or you will take anything from our mall and your gift voucher amount is 2000 rupees. You are extremely happy कि 2000 rupees का मुझे कुछ purchasing करना है. So what you think कि 1780 my total amount is this one and gift amount is my 2000 rupees. क्यों ना मैं कुछ ऐसे परचेजिंग कर दूं कि माई टोटल अमाउंट इज 2000 से. ठीक है, सो मीन्स आई नाउ आई एम अनेबल टू डिसाइड कि व्हाट आइटम आई विल टेक और कितना अमाउंट हो, कि मेरा ये जो टोटल अमाउंट अभी आया है बिलिंग अमाउंट, इट विल बी नाउ बिकम 2000. ठीक है, सो फॉर दैट दिस टाइम यू आर नॉट एबल टू डू वर्क, वी आर नॉट एबल टू प्लेस एनी फॉर्मूला हेयर. सो फॉर दिस वी आर यूजिंग एक्सेल सॉल्वर. Excel solver, as its name suggests, Excel solve कर रहा है हमारी प्रॉब्लम को. So now click on data tab. Children, on data tab you will click, you will check here solver is there in analysis group. When I click this window app में set target cell. Target cell means मुझे किस में चेंज करना है, 1780 जो ये अमाउंट है इसमें चेंज करना है. इसको मुझे कितना करना है, 2000. मुझे कुछ इस टाइप से शॉपिंग करनी है. आई एम सेलेक्टिंग दिस वन. इक्वल्स टू, मुझे इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, सो मेरे को कितना रखना है वैल्यू, 2000 रखना है. बाय चेंजिंग सेल, किस में चेंजेस कर सकते हैं, बाय चेंजिंग सेल. हियर आई एम सेलेक्टिंग, देखो ये आइटम का जो नंबर है मुझे इसमें कुछ चेंज हो जाए, इट्स ओके. ठीक है, टोटल मत सेलेक्ट कर लेना. आउट ऑफ दिस आइटम आई वांट टू डू एनी चेंजेस, कि मैं कौन से आइटम को कितना परचेज करूं कि टोटल जो मेरा बिल है वो 2000 रुपी का आ जाए, एंड आई विल यूटिलाइज दिस गिफ्ट वाउचर. And here, so by changing cell in B4 to B7 means these cell. Subject to the constraint, now what condition you want to apply here. So I am clicking here add. मेरी first condition I want to apply कि मेरा ये जो 1780 amount है means this cell का address equal होना चाहिए. किसके equal होना चाहिए, ये 2000 रुपी जो amount है इस cell की. ठीक है, मेरा first condition क्या हो गया कि ये दोनों amount match होने चाहिए. Now click on add.
First constraint add, constraint means condition I am placing. Now second constraint what I want, my second constraint is कि ये वाला जो item का amount है means the total item ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, या तो वैल्यू इनकी जीरो दे दे या वो मुझे इनमें पॉजिटिव नंबर दे दे कि कोई आइटम है या तो मैं वन परचेज करूं, आइदर आई विल परचेज टू, ऐसा थोड़ी हो सकता है दैट टी शर्ट 1.5 आई विल परचेज. सो इट मीन्स दैट इट आई वॉन्ट हियर दैट नंबर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, जीरो हो या उससे ज़्यादा हो, नेगेटिव नहीं हो जाए. सो आई एम क्लिकिंग हेयर एड. My third condition children I want to place on this item same thing कि जो ये मेरी condition है ऐसा नहीं हो ये मुझे points में दे दे, है ना, 1.5 2.5. so या तो मेरे को टी शर्ट परचेज करनी है, either I will not purchase the t-shirt. so here you will select that condition is integer होना चाहिए, integer number you have learned ना, integer type होना चाहिए and click on add. So from my side I have placed all the condition. Now Excel will solve my this problem by selecting its method and with all three constraint. उसको याद रखना पड़ेगा. Cell reference boxes are empty. Okay, cancel. You will cancel this. Now you will check that solve parameter, this target value, इसको value set करना है 2000. किस सेल में चेंज कर सकता है, this one B4 to B7 में कुछ चेंजेस करने हैं. एंड दीज आर द थ्री कंडीशन डेट आई प्लेस. ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इन दोनों कॉलम्स, 1780 और 2000 का वैल्यू सेम होना चाहिए और वैल्यू मेरा जो है इंटीजर होना चाहिए. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सॉल्व. व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन सॉल्व यू विल चेक दैट व्हाट एक्सेल हैज डन. What Excel shows to me result कि okay you want to take this benefit now of 2000 rupee. So what you will do, you will go and purchase 10 t-shirt of 200 rupee and in this manner you will utilize your 2000 rupee voucher. Okay, so this one is your Excel solver. This in this manner it work कि you will go and purchase 10 t-shirt of 200 rupee each and total 2000 rupee. You will check that my this amount and gift voucher amount, now both amounts are same. So this one is Excel solver. Okay children, so I hope you will understand this. If you found any problem you will tell this to me, I will repeat. Okay class, thank you.